Essay 520 Analytical Procedure. Very important for your exams point of view. Repeatedly some questions are asked in your exams from this essay. So let's start quick revision of essay 520, that is analytical procedure. First of all, very broad definition as per your study material for analytical procedure is: analytical procedure is analysis of significant ratios and trends. Significant ratios and trends, including resulting investigation of fluctuations and relationships that are inconsistent with other relevant information or which deviate from predicted amount. So this is the definition of analytical procedure as per your book. So from this definition, we can conclude that analytical procedure mostly include three methods, that is ratio analysis, trend analysis and structural modeling. Now in this analysis, we can compare financial to financial information and a comparison between financial information with non-financial information. Say for example, if you are comparing your sales, your turnover amount with the debtor, so these both are included in your financial statement. So these both are financial information you are comparing with. Say परचेज वर्सेस क्रेडिटर्स, परचेज और क्रेडिटर्स का रेशियो आप मैच करते हो, वो भी एक इक्विवेलेंट अमाउंट का मैचिंग उसमें होना चाहिए. देन सेल्स वर्सेस मार्केटिंग एक्सपेंसेस, तो वो भी कुछ रिलेवेंस होगा उन दोनों के बीच में. सो दैट इज कंपेरिजन बिटवीन फाइनेंशियल एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. नाउ से फाइनेंशियल वर्सेस नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, तो उसमें हो गया योर सैलरी एक्सपेंस और उसके सामने आप देखोगे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं. तो ये कंपैरिजन होता है फाइनेंशियल वर्सेस नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. जैसे कि सेकंड एग्जांपल दूँ, रेंट पेड इन कंपैरिजन टू द एरिया फॉर विच यू हैव पेड द रेंट. तो ये हो गया फाइनेंशियल वर्सेस नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. एरिया ऑफ योर प्लेस इज नॉट देयर इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट. Number of employees are not there in your financial statement, but still it is relevant, it is important to compare your financial versus non-financial information together. Now what are the objectives of auditor relating to essay 520? So objectives of the auditor are to obtain relevant and reliable audit evidence when using substantive analytical procedure. Second, to design and perform analytical procedures near the end of audit that assist the auditor when forming an overall conclusion as to whether the financial statements are consistent with auditor's understanding of the entity. So these two are basically the objectives of auditor to analyze the analytical procedure. Question may arise, why this comparison between financial versus financial versus non-financial is important. So the answer is, understanding financial relationship is essential in planning and evaluating the results of analytical procedures and generally requires knowledge of the client and the industry in which the client operates. How the auditor should perform analytical procedure. So firstly, auditor should plan about, first is nature, time and extent of the work. Second, to understand the entity and its nature of transactions. Third is to identify risk of material misstatement that can be there in the financial statement of your client. So auditor should plan and then perform substantive analytical procedure. Now in SAP, auditor should check suitability, reliability, then he should develop the expectations, that is comparison and what the outcome may occur, and then he should compare difference between actual and expected. And finally the stage of conclusion comes, that at the conclusion stage auditor should give conclusion based on this analytical procedure.
One more question in your PM, it means asked in your past exam, that what are the specific criteria for performing substantive analytical procedure. So SAP criteria are: first, to understand, to identify the sources of information for developing such expectation. So first is source, second is comparability. As I said, comparability of financial information versus financial information, or comparing financial versus non-financial information. So first criteria is source, second is comparability, third is nature and related information for your client's entity, and fourth is management's control over preparation of financial statement. So these four words you have to remember, that are the criteria for SAP procedure, that is substantive analytical procedure. Now one more very important question is, what are the examples or what are the sources of information for developing such expectations as per SA 520. So the examples are: financial information for comparable prior periods giving consideration to known changes. प्रायर पीरियड के जो डेटा है उसको करंट पीरियड के डेटा से आप कंपेयर कर सकते हो. सो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर कंपेरेबल प्रायर पीरियड आइटम्स. सेकेंड इज एंटिसिपेटेड रिजल्ट्स, फॉर एग्जांपल बजट्स, फोरकास्ट इंक्लूडिंग एक्सट्रापोलेशन फॉर इंटरिम और एनुअल डेटा. आपने जो भी फोरकास्ट किया है, आप जो भी प्रिजम्पशन कर रहे हो, तो उसको आपको कंपेयर करना है विद द एक्चुअल रिजल्ट. थर्ड इज रिलेशनशिप अमॉन्ग एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विद इन द पीरियड. रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब जैसे कि मैंने बताया, सेल्स वर्सेस डेटा, परचेज वर्सेस क्रेडिटर, सेल्स वर्सेस मार्केटिंग एक्सपेंसेस. तो वो हो गया रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन which both are present in your financial statement. Then fourth is information regarding the industry in which client operates. For example, gross margin information. जैसे कि आपका client for example रियल एस्टेट में है, तो उनका जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है उसको कंपेयर करना चाहिए बाकी की रियल एस्टेट इंडस्ट्री के साथ, कि जनरली रियल एस्टेट में कितना प्रॉफिट रहता है. लास्ट इज रिलेशनशिप और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विथ रिलेवेंट नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. सो वही सारी घूम फिर के बातें हैं जो अब तक की आगे हमने डिस्कस की थी. सो सोर्सेज कहाँ से आप ले सकते हो फॉर एक्सपेक्टेशंस. तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर कंपेरेबल प्रायर पीरियड्स. सेकेंड, फोरकास्ट जो करते हो उसको कंपेयर कीजिए. थर्ड इज एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, दैट इज फाइनेंशियल वर्सेस फाइनेंशियल. फोर्थ आप साथ में ही लिख सकते हो, फाइनेंशियल वर्सेस नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंपेरिजन. एंड फिफ्थ इज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इंडस्ट्री इन विच योर क्लाइंट ऑपरेट्स. सो इतना ही है ऐसे 520 में. वैसे तो इजी है, लेकिन इसमें थोड़े ऑडिटिंग वर्ड्स जो कि टिपिकली आपको यूज़ करने होंगे तो वो ज़्यादा है, तो इसीलिए इसको बार बार देखना और इसको रिपीट करते रहना, रिवाइज करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो आई होप यू लाइक दिस सीरीज़. आप कमेंट करके बताइए वेदर यू फाइंड दिस सीरीज़ हेल्पफुल और नॉट. सो सी यू गाइज, सी यू विद द नेक्स्ट essay. Stay tuned. Bye bye.